Hello everyone, welcome back to my channel English with Desi Madam. I'm Rita. How are you guys? I hope you all are guys doing definitely fine. Friends, in this video I'm going to tell about a very important topic. So please, I humble request to all of you, please watch the video right till the end. And I can promise you that this video is going to very helpful, very useful to all of you. Thank you. So without any further delay, let's get into the topic. Friends, my today topic is that how to get confidence while speaking in English with others. Friends, I think confidence is not a thing which can be buy with any shops, any shop. Confidence is a inner quality which is developed by your practice. Okay, which is developed with practice. People who wants to become a fluent English speaker, okay, he have a more confidence to speak English fluently, to speak English with other, because without confidence any work, any language, any ability can't be done good better, can't be done in good manner. So in my opinion, confidence is a confidence is very important. Friends, confidence is very important. I think when we not when we not get out in our comfort zone, okay, when we not get out in our comfort zone, then how I get confidence. But in my opinion, कंफर्ट जोन वह समय है जब आपको मौका मिलता है बोलने के लिए और आप बोल नहीं पाते हो. ओके, अंग्रेजी में वेन एवर यू give a chance, whenever you have required to speak English in that particular moment, but you can't because of fear, which is stopping you not to speak in that particular moment. Okay, friends, this is your comfort zone. Okay, not speaking at that particular moment is your comfort zone. So get out your comfort zone. Friends, speak whatever you know, whatever you have knowledge about English. Speak. Don't because you might think that if I speak in English, then someone laugh at me, someone fun of me. So friends, first of all, you think you are a learner, you are a beginner. So okay friends, in a speaking process, then it's happen, someone laugh you, someone make a fun of you, it's happen, but you should carry on your प्रोसेस. ओके फ्रेंड्स, बिकॉज देखिए आपको एक स्पष्ट रूप से कहना चाहती हूँ कि इंग्लिश हमारे इंडिया में केवल 10% लोग बोलते हैं. ठीक, तो कोई जरूरी नहीं कि सभी इंग्लिश में एक्सपर्ट हो. फिर आप क्यों इतना संकोच कर रहे हैं? व्हेन आई गेव अ करेज, ओके, टू क्रिएट दिस चैनल. इफ even I am a learner, I am a beginner in speaking now, but I have courage, I get out, I can get out in my comfort zone. So I create this channel. I am not a good learner, I am not a good speaker, still I am learning. I have been learning English speaking since 8 days before. So when I can get out on my comfort zone, I have no worry. People laugh at me watching this video. Okay, people make a fun of me, and after watching this video, I have no worry, friends, because only I want to speak in English fluently. Then I want to speak in English. So why I think with others who they make a fun of me, they troubled me, they, because I have done many mistakes in speaking English. Friends, I have done many mistakes, but I speak in English in front of you. इट्स माई कम्फर्ट जोन. जो मैंने इस कम्फर्ट जोन को से आगे जाके मैं बात कर रही हूँ कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि आप इस वीडियो को देख के हंस रहे हैं, या कोई दूसरा वीडियो को देख के हंस रहा है, या मेरे रिलेटिव्स देख के वीडियो को देख के हंस रहे हैं. कोई फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज मैं चाहती हूँ, आई वॉन्ट टू स्पीक इन इंग्लिश फ्लुएंटली. देन वाट, क्यों, वाई वरी दैट नॉनसेंस थ्योरी. यदि आप पायलट बनना चाहते हैं तो आपको ऊंचाई से किस बात का डर? अगर आप अच्छे इंग्लिश स्पीकर बनना चाहते हैं तो आपको बोलने से क्या डर? आपको कभी ना कभी तो स्टार्ट करना पड़ेगा इंग्लिश स्पीकिंग. जब आप इंग्लिश स्पीकिंग स्टार्ट करोगे, बिकॉज इंग्लिश इज नॉट आवर मदर टंग, इंग्लिश इज अवर सेकेंडरी लैंग्वेज. वेन एवर यू स्टार्ट योर जर्नी, ये दिस टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स विल हैपन. ओके फ्रेंड्स, ये होंगी, बिकॉज यू आर ए लर्नर, योर जर्नी इन स्टार्टिंग पीरियड. फ्रेंड्स,
जब तक आप अपने गोल को नहीं पहुंच जाते तो शुरुआत की समस्याओं को आप इतना ध्यान दोगे, फिर आगे गोल पे कैसे पहुंचोगे आप? गेट यू गेट माई पॉइंट? सो फ्रेंड्स, यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हुआ, इफ़ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए जय सिया राम।